Cog. Given previous results, I should make a few adjustments to the experiment and ensure that the materials and equipment are all in order. As for the potion I need to make... Oh, Traveler, Paimon. What brings you here? We're here to help with your task. We wanted to see if you could use some extra hands. My task? Oh, you mean the one Mr. Albedo told me about? The one from the Hexen Circle? Well, you're just in time. Ongoing? So, you've been working on it all this time? Yes. It aligns with other research topics I've been working on, so it hasn't been too much extra work. Still... What? Is there a problem with the I've been unsuccessful. Oh. It's not as simple as just failing. The whole theoretical framework behind this task is a bit more complicated than I imagined. Oh, right! You still haven't told us what kind of experiment it is. One meant to develop a potion that can transform sweet flowers into a variant 16 times its normal size. That is to say, the formulation of botanical augmentation reagent type 4, iteration 7. As you can probably guess, this is my 7th time running the experiment. Wow! So, basically, we need to make growth serum. Well, yeah, that's about right. This is my 7th attempt. But I didn't make many adjustments to the formula this time, because both the theoretical principles behind this experiment and the products of the process prove there's nothing wrong with it. But you haven't succeeded yet, right? Yes. I'm thinking that it's not my current formula that is wrong, per se, but rather, some other key element is missing. Oh! Then Paimon knows just what to do. Yeah! We came here to do just that. Here it is. That said, I'm still missing two Now that we can help. I need spring water from Springvale to use as the base, as well as Eye of the Storm fragments. But that last one could be tricky. We've got this! Let's tackle the Eye of the Storm first. Bow your head. Wait. Oz, reveal the... There is no escape! Alright, that's the first ingredient done. Wow, you two work fast. We can get the spring water down there. The high quality of Springvale's waters makes for a stable potion-making ingredient. That's all we needed, right? Yes. All right. Is something wrong? No. It's just... Do you mind if I watch from the side? Just for the purposes of accurate recording, I mean. I know lots of people don't like being scrutinized during experiments. So, thanks. Then, I'm ready to go whenever you are. I'll make sure to take detailed... So, are you ready to start the
it. Your execution was perfect. Really? Yes, I don't see any flaws in the brewing at all. Let me extract some and test the product's composition. Yes, like I said, flawless execution. The potion is perfect. It's exactly what I was... So? Was the 7th time that... Upon examination, it seems identical to the previous 6 iterations. Oh! Wouldn't that make the results identical? Not necessarily. Experimental outcomes can differ even with similar variables all around. You never know what the result will be. That's what makes experiments valuable in the first place. Come, let's test this thing out. I planted some sweet flowers beforehand which we can use. We just need to douse them with the potion and see... Snow is in fact one of water's natural self-cleansing mechanisms. But human activity tends to reduce snow's purity, so do not consume it. Alright, we poured the growth serum on the flowers. Is that all we need to do? Yep. The flowers need to fully absorb the potion, so it might take some time before we... What happens then? The flowers will grow in size while maintaining their original appearance. But then, when they reach 12 to 14 times their normal size, this will prove more than they can bear, as if some upper limit has been reached. They will wither and rot, assuming unnatural forms until nothing is left of them but liquid. Wait, what? So there's a problem with the growth serum then? No. Issues like ensuring that the leaves don't get too large, strengthening root diameter and load-bearing capacity, calculating how the increase in surface area might affect sunlight exposure and nutrition. So, why isn't it working? Because the flowers cannot transcend. As above, so below, is one of alchemy's guiding principles. Alchemy seeks mastery over matter, but this world has its limits. It's like a specification etched into the law that governs all things. Part of the purpose of doing multiple experiments is to determine if this specification is stable. Exactly. It proves that the limit continues to exist. Okay, this is all a bit over Paimon's head, but basically, you needed the experiment to fail to prove that the limits and borders in this world are stable? Oh, what a weird experiment. Huh? Looks like one of the flowers is reacting. Wait a second. That's not a sweet flower at all. Careful! It's a whopper flower. It must have absorbed some of the potion. Wait, but that's happened before, and it's never gotten this big either. Can this mean... We can talk about this later. Let's get rid of it first. Surge. Midnight Phantasm. Illusion shattered! Enhanced animal module 75. Stand clear. Animal test. Be sanctified. Phew, we did it. But, was it supposed to get... I could only make a rough estimate during the battle, but it looked at least 16 times its original size, maybe even larger. This means that the experiment... Wait, but isn't that a good thing? I'm still not sure what the implications are. But if further attempts succeed in reproducing this result, that means that something's different. Perhaps the limits and laws of this world are changing due to some unknown fact. I can't say if that's good or bad, but from an alchemical perspective at least, expanded boundaries means that more possibilities are now open to us. Either way. Seems... That said, it could also be an effect of the person who made the potion. There could also have been something special about this particular whopper flower. There's a lot that still needs to be confirmed. So I suppose this task opens the way for further questions. Well, we're here if you ever need some help. Just think about it! Paimon could probably beat a whole gang of treasure hoarders to a pulp if you were 16 times bigger! I have my doubts. The only reason the serum worked on the whopper flower was because its internal structure was similar enough to a sweet flower. If you drank, you might become 16 times bigger,
but you might also turn into a plant-based life. Yeah, nope, that's not happening. Oh, by the way, Paimon wanted to ask, why is all your research focused on things like sweet flowers and sunsettias? Oh, that's simple. Both sunsettias and sweet flower nectar taste sweet. So in that sense, accidentally making a whopper flower 16 times bigger comes with a hidden benefit. Because whopper flower nectar... Tastes exactly like sweet flower? That's right. Once I've extracted the sugar from the nectar, I'll give you some. You get it! Ad Astra Abyssosk. Greetings, traveler. Hey there, Catherine! Oh, and Oz and Fischl are here too! What a coincidence! All things in this universe must plunge into darkness. 'Tis only natural that those who seek light should cross paths in the realm of dawn. Mein Fräulein means to say she's happy to see you both. And I feel the same. It's been quite a while, Traveler and Paimon. You're here just in time. Yai Publishing House has a commission for you, traveler. An editor. Much of the information was kept from the guild for business reasons. All we know is that it has something to do with the author of the Legend of the Shattered Halberd. What? Surely you don't mean... Wait, is this author really that important? What if we weren't here? Or if we decided not to take the commission? The editor would just be wasting their time. In that case, it'd be a free trip to Mondstadt where one needs only pass some information along. That's an opportunity most would fight over. In any case, if the commission is of interest to you, the editor is waiting at the Good Hunter. Just look for the man dressed in Inazuman. Hold on! Halt thy steps, good traveler. Fate cast you upon the tides of the world, but not for you to stand alone in the face of its desolation.
Nay, you step forth onto the path of the Immernachtreich. What mein Fräulein mean? Fischl seems really jazzed about this commission. Do you think she has some kind of insider information? Well, let's head to the Good Hunter to meet with this editor then. Alright, let's see who lucked out and got this free trip to Mondstadt. Wait, you're Shing! Oh, Genyu's editor, Onodera! Traveler, thank you for all you've done for us in the past. I come here today with a commission from Lady Yai, with which I'd like your help, should you be willing. Oh, and might I ask who this person dressed like Princess Fischl is? You have the pleasure of speaking to our eminent person, Fischl, Prinzessin de Vertelung. Mein Fräulein means to say that her name is Fischl, and that she is most pleased to meet you. Yep, this is Fischl. She's a reliable adventurer, and she's here to help. Yeah, I, kinda got that the first time. Since thou hast learned my name, understand this. To speak it is to be absolved. Praise it, therefore, and thou shalt earn thine salvation. Mein Fräulein means to say she... Ah, I see. I completely concur, my lady. Remembering names is simply basic etiquette. And if you might lend me succor in solving this problem, I shall indeed praise your names to the heavens above. As many times as necessary, in fact. You understood Fischl language before Oz could even finish translating. Well, let's get down to brass tacks then. Now, have you heard of the author Mr. Nine? He's famous for writing the legend of the Shattered Halberd. Flowers. What was that, mein Fräulein? Flowers for Princess Fischl. That's what Mr. Nine is actually famous for. Mein Fräulein means to say, even should the creator be cold and unmoving, the Prinzessin and her Immernachtreich's resplendence might yet compel them to weep. Well, sure. The author of Flowers for Princess Fischl, Mr. Nine. He sent a letter from Nodcry asking for help, and he seems to be in bad shape. So ask the Adventurers Guild or a local mercenary to find him. Where it's so simple. But here's the problem. We don't know anything about Mr. Nine. What he looks like, how old he is, where he's from. He's only ever communicated with us via letter, from addresses all over to that. And he's never showed up to our annual meeting or events. Not once. So, what are we supposed to do? Well, we'll need to investigate Mr. Nine's identity, that's for sure. We did a bit of digging ourselves, and we realized that ever since completing the Shattered Halberd series, Mr. Nine's handwriting began to change. His initial editor has decided to retire to focus on his own writing. And he didn't have much to add either. Whatever hath once existed in this world is enshrined in the memory of the Prinzessin de Vertelung, to endure unchanging in her Immernachtreich. For from the sacred primordial words flow the wellspring of all cause and consequence. Mein Fräulein means to say, Yes, we had the same idea. So, we tracked down the original manuscript of the Legend of the Shattered Halberd. Aw, man! Genyu's gonna be so mad he missed out on this. Wait, you didn't need Oz to translate this time either, Onodera. Osvaldo Hafnavines, hast thou perceived something? No such Henry exists, mein Fräulein. I sense a faint, elusive resonance. Something akin to the
magnetic field, gravitational force, and threads of cause and effect that surround you, mein Fräulein. Isn't that interesting? Well, in the end, our only takeaway was that the design and craftsmanship of the paper point to it coming from Qingse village in Liyue. Huh. Could Mr. Nine be from Liu? No, wait. If we're talking authors from Qingse village, specifically... No, it couldn't be. Chong the Ninth? Ah, I've heard of him. He won a Best New Author award for the first apprentice of Guhua. It matters not. Though the Saint of Tears and the Saint of Atonement perform manifold labors on divergent principles, their power flows but from a single source. Mr. Onodera, if you please. Wait, Oz? It's great that you trust Onodera and all, but we're still in the dark over here. You speak true, mein Prinzessin. Even if Chong the Ninth doesn't turn out to be Mr. Nine, he's still an author, and he could have had contact with him. I think it's a good place to start. Yeah. Well, either way, I appreciate the help. I'm counting. Chong the Ninth is... It doesn't look like there's anyone around we can ask either. Shall we wait? Seems like that's all we can. Still, could his absence mean that he really is Mr. Nine, now kidnapped and sent to Nodcry? Perhaps we should have a look around his... Barging in without permission seems wrong. But if he really is Mr. Nine, then... Nope. Nothing useful. Just seems like a bunch of ordinary... Nay, I, the Prinzessin, have beheld the mystery of the universe enshrined in these specks of dust. What hath been revealed is the very fount of wisdom. Ever does it flow toward the shores of truth. Mein Fräulein means to say, she thinks this is a clue. Wait! It looks like the soil's been overturned. Oh no. Did some kind of overzealous fan have buried him in here? Maybe we should call him Millilith. What do you think, Trev? It's all right, Paimon. Mr. Nine's... And since mein Fräulein would never do anyone harm, I'm certain the same is true of his other less avid supporters. What is the meaning of this? I'm calling the Millilith. Chong the Ninth! You're not dead! Or kidnapped! What are you even talking about? Oh, wait a second. You're the ones who came here with that young lad from the Guhua clan. Yes, I remember. I'm guessing this is a misunderstanding then. The question still stands, though. What are you doing digging around my house? Oh, well, actually, we just wanted to know if you've ever written under the pen name... What? Not even a whole bucket of hallucinogenic mushrooms could make me that delusional.
No, no. If I were Mr. Nine, why in the world would I enter all those writing competitions? To what? Demolish the competition from the shadows? Yes, doing a real bang-up job, aren't I? My submission's never even been selected. The classic archetype of the boy hero is outdated. That's the kind of critique I get. Even opening with a plot twist or disguising your hero as a fool is falling out of fashion. Modern readers are drawn to the boundless imagination and innovative world-building character of Mr. Nine's work. Good point. Besides, if I were Mr. Nine, I would have come clean the minute First Apprentice of Guhua won that award. What? That old beggarly Chong the Ninth is Mr. Nine? No, there must be some mistake. What a sight that would have been. Yeah, and when we were here with Shinjo that one time, you talked up the legend of the Shattered Halberd. If you were the one who wrote it, that'd be like Jean complimenting herself for being a good knight. It just doesn't add up. In any case, while this gentleman isn't the Mr. Nine we're looking for, I sense something of interest on his person. It's a peculiar signature. The same threads of fate I sensed on you, mein Fräulein, and on the manuscript. I believe the traces are related to Mr. Nine, and it appears I can't— Hey, that's perfect. Once we head to Nocrai, you should be able to find Mr. Nine, no problem then. But back to the signature. What were you doing before this, Chong the Ninth? Oh, well, I ran out of manuscript paper, so I went to buy some. I'm particular about that kind of thing. Creation of literature demands the highest— Ah, no wonder. Mr. Nine uses the very same type for his manuscripts. Huh, that explains it. Thanks, Chong the Ninth. We should get going. I'm not quite sure what I did, but you're welcome. Farewell, creator of another world. Though I must say, the laws and narratives thou hast ordained can scarce compare to the dream dust sedimented in the Immonachreich. Mein Fräulein means to say, your writing isn't— I mean, mein Fräulein offers her thanks. It should be up ahead. Wait, did something attack that Sealy? Something... And it bears the same signature I sensed before. Then it would seem. By royal Wait, a moonlit night for all. Huh. Looks like the Sealy is showing us the way. Let's follow. What are you doing here? Wait, that voice. Also, that should be our line. We were looking for Mr. Nine and our search led us here, but now it seems we've found you instead. Ah, I see. Well, Mr. Nine is right here. Hello. What bizarre demarung is this? Never in 1,000 sunsets have I heard of such a thing. In truth, I too aspire to be an author. But I'm also partial to direct communication. Talking is rather inconvenient by comparison, and as I'm sure you can understand, writing things down is even more tedious. I thought perhaps if I found someone with whom I could share my ideas, it might give me the same release as writing. But then those stories would never see the light of day, which would be a shame. So, I tracked down an old Sealy friend of mine and told her all the stories I was imagining.
Then, I sent her to find people with similar aspirations to write them in my stead. We even came up with several character traits to lend a certain authenticity to Mr. Nine. A receding hairline was one of them, I think. Yep, I'm the one she roped into all the... Come now, it was beneficial for you too. By inhabiting those authors and mobilizing their language faculties, you were able to hone and eventually recover your capacity for speech. And anyway, an angel has always functioned like a sort of a flash of inspiration in someone's head. I'm sure it was like stepping into old shoes. So you, what, possessed people? Oh, it's fine. She did it while they were sleeping. As long as the person is someone who dreams of creating worlds of their own, this inner writer within them will automatically awaken. Wait, but... Nicole sent me to monitor the situation in Notcry. And it's super dangerous, okay? So I needed some help. It's not like I have the knowledge or power of the heavens. As for your friend over here? Well, you see, when writing a story, it's not uncommon to incorporate certain half-true details. For realism's sake, you understand? Yeah, we've seen that before. A real curse was written into an Inazuman light novel once. Indeed. In a similar vein, Mr. Nine's stories are full of metaphors, including one for the creation of life. What it describes isn't made up, per se. We just never imagined someone would actually manage to use it. Until you came along, young lady. Mein Fräulein is speechless. So if I may ask in her stead, did she manage to use one of these half-truths in Mr. Nine's novels to create me? It was more like 70% made up, 30% true. No, it was 90% made up, 10% true. I thought it was too dangerous, so I changed it. See, I knew you'd never read my books. You don't seem too surprised, Oz. Well, I suppose I've vaguely sensed this since the beginning. Regardless, it is an honor to serve mein Fräulein. Well, once our affairs in Nodcry are resolved, Mr. Nine will be able to return home. Yes. I don't want to be your eyes here. It's too dangerous. Oh, but, while you're at it, could you pass a message along to that guy in Chingsa Village? I've been splitting the royalties with him 90-10. His share's been buried in his yard all these years. Wait, what do you use the Mora for? I bury it, and then lead people to the treasure. Guiding people is in our nature. It's what I love to do. Feel free to come search for my personal stash someday. I've buried it at the furthest end of the Immernachtreich. I will. I absolutely will. Mein Fräulein? And, I just want to say that I really like your books, Mr. What mein Fräulein means is, though the cosmos stretch forth in unending darkness, yet shall come an hour when all things shine. I'm glad to hear it. All in all, it seems you've already found my greatest treasure. All right, that settles that. Now, I need to have a quick argument with Mr. Nine about who really deserves to be considered first author. Absolutely not. Oh, that's right. Hey, Chang the Ninth! We have something for you. Oh? What? Where did all this Mora come from? About that. So, the thing is... Right. Mr. Nine really admires your work, so he did... Wait, what? So, channeling Mr. Nine actually worked? I can't believe it!
Melusines are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them. There is no escape! Silence! Let the mighty be humbled! Illusion shattered! Shine down! Shadow Raven! A new moon rises. Bow your head. Who's there? Oz, reveal thyself! There is no escape! The tides beckon. You're pretty sure. You're pretty sure. Let the mountain's veins boil! Everybody stand back! Let's light it up! Wrath from the skies! Try and stop! Bring it! Show no mercy! Sha! Ha! Sha! Ha! I'm sorry. I'm going in! Take me. Stars above. Incinerate!
Time for a nap. Oh, wow. Where did my sunglasses go? Fearless. Time to shine! Shower me with goose on the loose! A dash of frost decided by destiny! This was not foretold. The stars are fading. Let my name echo in song! A little amuse-bouche! Merciless. Paradigm shift! Yoo-hoo! Merciless. Shower me with praise! A burst of flavor! A dash of frosting! Let me scry! Into the void! Shadows of fate! The show begins! Delves into... May I present... Destiny cannot be denied. Goose on the loose. A little amuse. Time to shine. Merciless. Paradigm shift. Ad Astra. Thank you for complete. Ad Astra.
Wane. Midnight Phantasmagor! Swirl, Mark 2, stand clear. Animo test 6308. Silence! Be sanctified. A new moon rises. Whoa. Shadow Raven! Stand clear. Settle down. Three moons converge. Animal hypostasis and... As you wish, Maidfoot. The tides beckon. Absorption test. A moonlit night for all. Wane. Swirl, Mark 2. By royal decree! Midnight Phantasmagoria. A new moon rises. Whoa. Animal hypostasis emulation. Animal test 6308. As you wish, Maidfoot. Stand. Unexpected outcome. Three moons converge. Surge. Shadow Raven! Let. Swirl. Mark 2. Absorption test. Stand clear. Don't break my glasses. Yep. Be sanctified. Animal test 6308. Enhanced animal module 75. Midnight Phantasm. A moonlit night for all. Bow your head. Let the mighty be humbled. Oz revealed by... Absorption test. Stand clear. Swirl. Mark 2. Three moons converge. As you wish. Settle down. Be sanctified. Absorption test. Animal hypostasis and... A moonlit night for all. Wings of Darkness! Bow your head. No rest for the wicked. Animal test 6308. None of us. Let the mighty be humbled. Settle down. Three moons converge. By royal decree... Absorption test. My research. As you wish, Maid. A moonlit night for all. Surge. Swirl. Mark 2. Stand clear. Absorption test. Be sanctified. Midnight Phantasmagoria! A new moon rises. Wane. Animal hypostasis emulation. The tides beckon. Shadow Raven! Three moons converge. Whoa. Animal test 6308. Swirl. Mark. Let the mighty be humbled. Wings of Darkness! Come! A new moon rises. Surge. Enhanced animal module 7. Bow your head.
tides beckon. Shadow Raven! Three moons converge. Absorption test. Settle down. Let my name echo in song! Strike written in the stars. Let me scrap. The pinnacle of excellence! That's more like it. Delve into destiny. Leave my Another star goes out! How brilliant! Shadows of fate! A dash of frost! Time to shine! Shower me with... Decided by destiny! Let me scribe! Extinguish! Someone else has to... Silence! A moonlit night for all. Surge. Midnight Phantasmagoria. Absorption test. Stand clear. Settle down. Let the mighty be humbled. Wayne. Wings of darkness! Surge. Three moons converge. Animal test 6308. The tides beckon. Midnight Phantasm! A new moon rises. Animal hypostasis emulation. Absorption test. Animal test. Bow your head. Let the mighty be humbled. Shadow Raven! A moonlit night for all. Wayne. Stand clear. I should... Midnight Phantasm! A new moon rises. Surge. Swirl. Mark 2. Absorption test. Animal test 6308. Absorption test. Be sanctified. Silence!
Midnight Vent. A moonlit night for all. Whoa. Enhanced animal module 75. Stand clear. Absorption test. Let the mighty be humbled. As you wish, main foil. A new moon rises. Surge. Stand clear. Swirl. Mark 2. Settle down. Be sanctified. Wings of darkness. 3 moons converge. Wane. Absorption test. Silence! Let the mighty be humbled! Shadow Raven! A new moon rises. Animal hypostasis and Animal test 6308. Settle down! Be sanctified. Written in the stars. Delved into destiny. Cursed. A burst of flavor. Shadows of fate. Paradigm shift. Wings of dark. 3 moons converge. Whoa. Swirl. Mark 2. Stand clear. Don't break my animal test 6308. Let the mighty be humbled! Shadow Raven! A new moon rises. Surge. Enhanced animal module 7. Animal test 6308. Stand clear. The tides beckon. Silence! Midnight Venta. A moonlit night for all. Whoa. Absorption test. Stand clear. Animal hypostasis and... Let the mighty be humbled! Shadow Raven! A new moon rises. Wane. Animal test 6308. Settle down! The tides beckon. Midnight Phantasma! 3 moons converge. Surge. Enhanced animal module 75. Stand clear. Don't break my glass. Absorption test. Justice is blindsided. As you wish, main foiline. A moonlit night for all. Wane. Swirl. Mark 2. Animal test 6308. Stand clear. Absorption test. Be sanctified. Midnight Phantasm. A new moon rises. Surge. Silent! The tides beckon.
Animal hypostasis emulation. Animal test 6308. Oz, reveal thyself. A moonlit night for all. Absorption test. Animal test 6308. Stand clear. Enhanced animal module. Be sanctified. 3 moons converge. Wane. Midnight phantasm. Absorption test. Stand clear. The tides beckon. Settle down. As you wish, me. A new moon rises. Glow. Animal hypostasis emulation. Animal test 6308. Absorption. Silence! Let the mighty be humbled. Midnight Phantasm. A moonlit night for all. Stand clear. Doesn't hurt. Doesn't hurt. Enhanced hand. Settle down. The tides beckon. Shower me with praise. Let me scribe. Ja, ra. Delve into destiny. Am I... Midnight Phantasm. 3 moons converge. Wane. Animal hypostasis emulation. Animal test 6308. Stand clear. Bow your head. Be sanctified. Wings of darkness. A moonlit night for all. Surge. Absorption test. Stand clear. Enhanced animal module 75. Settle down. An oversight on my part. As you wish, me. 3 moons converge. Glow. Animal test 6308. Swirl. Mark 2. The tides beckon. Bow your head. Wings of darkness. A moonlit night for all. Wane. Absorption test. Animal test 6308. Settle down. Let the mighty be humbled. Midnight Phantasm. A new moon rises. Glow. Animal hypostasis emulation. Stand clear. Oh, justice is blindsided. Settle down. Let me scribe. Fate is upon you. Shadows of fate. Surge. Yoo-hoo! Let the world collide! The pinnacle of excellence! A little of it written in the stars.
Mine to wield. Let me scrub. Mine to wield. Let my name echo in song! Goose on the loose! Fate is upon you! Extinguish! Mine to wield. Bow your head. Wayne, By royal decree, absorption tests need to make adjustments. Animal test 63. odds reveal the... The tides beckon. As you wish, maiden. 3 moons converge. Surge. Enhanced animal module 75. Absorption test. Settle down. Let the mighty be humbled. By royal decree... Wayne. Stand clear. A new moon rises. Wings of darkness! Animal hypostasis emulation. Be sanctified. Bow your head. Surge. Odds reveal thyself! Absorption test. Animal test 6. My research has... By royal decree... Silence! Wayne. Absorption test. I should sleep on it. Bow your head. The tides beckon. Animal test 6308. Stand clear. Silence! 3 moons converge. Surge. Wings of darkness! Enhanced animal module 75. Animal test 6308. Let the mighty be humbled. My research has... Odds reveal thyself! Wayne. Settle down. The tides beckon. Shadow Raven! A new moon rises. Whoa. Let the mighty be humbled. Animal hypostasis emulation. By royal decree... A moonlit night for all. Silence! Surge. Ah! Wings of darkness! Come! A new moon rises. Settle down. Be sanctified. Bow your head. Odds reveal... Wayne.
The pinnacle of excellence! A little move decided by destiny! Mine to wield. Strike a pose! A dash of frost written in the stars! Delved into destiny! Fearless! Into the void! Let my name echo in song! A burst of flavor! Off to the breed! Let me scribe! A dash of frost! Decided by destiny! Paradigm shift! Time to shine! Yoo-hoo! Goose on the loose! A little amuse-bouche! Annihilate! Silence! Stand clear. Shadow Raven! 3 moons converge. Let the mighty be humbled! Bow your head. Hello. Swirl! Mark 2! Absorption! अब Surge! आवाज आ रही है A new moon rises. Midnight Phantasm. One shall... ए तेरे कूदने का ऐसा करते इसे Once इसको जल्दी करना पड़ेगा मुझे छुट्टी को Settle down. Be sanctified. वेल लिया भाई ये आपके बार का स्पाइरल एबिस ना मेरे को लगता है बस लोगों को परेशान करने के लिए बनाया है तो converge. Flame. Shadow Raven! Let Night Bolt Enhanced Animal Module 75 and The tides beckon. Silence! by royal decree. Surge. A moonlit night for all. Absorption test. Need to make एक ही adjustments. झटके में मार दे रहा है Be sanctified. लाइक ऑलवेज बहुत इजी था भाई आप इतना इजी कैसे हो सकता है अब ये मत बोलना इसके लिए तू है Flame. Odds for a new moon rises. Bow your head. Justice is blind. The tides beckon. मार बे
गेम की आवाज़ बहुत ज़्यादा है। एक मिनट रुको, मैं गेम की आवाज़ कम कर देता हूँ। लो, अब कम कर दिया है मैंने गेम की आवाज़। स्कार्क फर्स्ट हाफ, सेकंड कोलंबिना के साथ सेकंड हाफ। अच्छा, तो फर्स्ट हाफ स्कार्क रखा जाए। चलो, आपकी भी बात एक बार ट्राई कर लेते हैं। अगर मैं स्कार्क पहले वाले में डालूंगा, कहाँ गई मेरी स्कार्क? स्कार्क कहाँ गई रे? ये रे, स्कार्क, फुरीना, ये और ये। अगर मेरे को स्कार्क यहाँ डालनी है तो क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से तो क्या कहते हैं, एक मिनट, अपोनेंट डिटेल में ये छुट्टी आएंगे फर्स्ट में, सेकंड में ये आएंगे, थर्ड में ये जो आएगा ये दिमाग खराब करता है, सबसे ज़्यादा दिमाग खराब करता है ये। नाविया, कोलंबिना, आइनो और बेनेट ले जा। हाँ ठीक है, ट्राई करते हैं। वेर इज माई नाविया? नाविया, कोलंबिना, आइनो। आइनो मेरी अपग्रेड नहीं है यार, सबसे बड़ी दिक्कत है। आइनो और बैनेट 70 लेवल है इसके, क्या कहते हैं वो क्या है, करेक्टर स्टेट्स क्या है मेरे को आइडिया नहीं है, एक मिनट चेक कर लूँ। आइनो टैलेंट्स लेवल 6 का कर रखा हूँ इसका। मेनली सब कुछ है, बस क्या कहते हैं अपग्रेड करना है इसको, ईएम वगैरह सब कुछ है। जेलो भी चलेगी बैनेट के बदले। हाँ, बैनेट के बदले जेलोलिन, चलो जेलोलिन ही रख लेते हैं। फर्स्ट हाफ में माविका रख ली जाए क्या? माविका से चलेगा काम? Let my name echo in song! Strike the pinnacle of excellence! A dash of frosting! Shadows of fate! Fate is upon me! Another star goes out! Yeah. Ha. 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 Yeah. Yeah. Shower me with praise! Let the world come alive! Goose on the loose! ना, इस करके इज बेटर। अच्छा चलो ठीक है, जब आप कहते हो कि इस करके इज बेटर तो इस कर को ही ट्राई कर लेते हैं। Let my name echo in song! Strike up the pinnacle of excellence! A little amuse but written in the stars! Delved into depth. Mine to wield. Time to shine! Shower me with goose on the loose! A dash of decided by destiny! मैं कैरेक्टर रख के बस बेवकूफ़ी करता हूँ, मेरे पास सब कैरेक्टर्स होते हैं, मेरे से बस निकलता नहीं है। अब इसमें इसके लिए उसी की कोई बात नहीं है वैसे। काफ़ी जल्दी मार दी यार। Three moons converge. Surge. Ding dong water bomb. Letting brave names echo. Ha! Coming at ya. Hey there. Hiya. A new moon rises. Wane. Look, a rainbow. Kerplunk! A proper send-off. From the watch out. Hear the echoes of the valley. Bring it. Hey there. What's your problem? Three moons converge. Ding dong water bomb. Attack! ओ भाई, बड़ी आसानी से
ए मेरी आईनो मर गई। अरे यार, मेरे को बचाना था, मैं डॉज करने के बजाय कुछ हो गया। हाँ। The pinnacle of excellence! Fate is upon you! Into the void! Charge! Ha! Tja! Ha! Tja! Ha! Tja! Strike a pose! A burst of flavor! Off to the freezer! Written in the stars! Shadows of fate! Power. Ha. Ha. Let my name echo in song. Yeah, the pinnacle of excellence. Fate is upon you. Let me sky. Yeah. Ha. Mine to wield. Ha. Ha. Yeah. Yeah. Ha. Ha. Yeah. एक तो ये बफ नहीं, अभी नहीं हुआ है, जस्ट अभी ट्राई कर रहा हूँ नई टीम के साथ। रोहित, ये नई टीम कुछ ज़्यादा ही खतरनाक चल रही है, देख सकते हो। ख़त्म भी हो गया अभी 8 पॉइंट कुछ सेकेंड, 1.5 मिनट के आसपास टाइम बाकी है, तभी हो गया। A moonlit night for all. Wayne, bring it. Hear the echoes of the valley. Lash attack! Coming at ya! Ha! Coming at ya! Cha! Fire! Well, a new moon rises. Glow. अबे तो तुझ पे फ्लेन्स है, इनेफा है, तू तो कर ही लेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को दूसरे कैरेक्टर से करना है ना। And watch out! Coming at ya! Cha! Fire! Well, अब मैं ओवर पावर टीम यूज करना चालू कर दिया, क्या करोगे? ये परेशान कर रहा था मुझे कई देर से। let the mountain's veins boil! सोचा था छोटे मोटे कैरेक्टर से कंप्लीट कर लूं, लेकिन फिर उसके बाद ओवर पावर कैरेक्टर सब यूज करने पे मजबूर कर दिया ये। मैं क्या करूं, देख ही रहते हो। आ जाएगा, कर दिया तेरे बाद। हाँ आ जाएगा, ट्राई करेंगे। उस पे नाविया है ना, स्कर भी है, फुरीना भी है। बिल्ड हो उस चूटिया तुम ना, उसका भी ट्राई कर लेंगे। ए 500 के फ्लिंस, वो है पावर क्रिप्ट है भाई। फ्लिंस के बारे में मत बताओ मुझे। हाँ वो पावर क्रिप्ट है, मैं नहीं जानना चाहता उसके बारे में कुछ भी। हाँ अब मैं उसको निकालूंगा, मैं नहीं, इतना पावर क्रिप्ट होने के बावजूद भी नहीं निकालूंगा मैं उसे। Strike a pop! A dash of frosting! Yeah. This is getting interesting. Power. Yeah. 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 Delved into destiny. Yeah. Yeah. Merciless. Ha. Let my name echo in song. Yeah. Deuce on the loose. A little amusement. Fate is upon you. Let me scribe. Paradigm shift. Ha. Yeah. मैं तुम्हारा फ्लिंस पावर क्रिप्ट होगा, मेरी इस करके तुमसे ज्यादा पावर क्रिप्ट है, ये याद रखना। हाँ वो बस ये बात ये है कि मुझे भी नहीं मालूम था उसके बारे में। Converge. Hear the echoes of the valley. Fire! Well. Look, the rainbow! Coming at ya! Coming at ya! Hiya! Now! A moonlit night for all. Wayne. Letting brave names echo! Fire! Well. Lash attack!
This is a random bullshit. Go. Let the mountain's veins boil. देखिए इसे रैंडम बुलशिट गो कहा जाता है। मुझे तो उन लोग पे दया आ रही है जिन पे क्या कहते हैं इस करके जैसी कैरेक्टर होगी नहीं। Shower me with prey. A dash of frost. Shadows of fate. Mine to wield. Let me scry. Off to the freezer. Mine to wield. गया मेरी इस कर। Am I? मुझे लगता है उसी तरीके से मारना पड़ेगा जो मैं सोच रहा हूँ। चलो मैं सोच रहा था कि इस तरीके से मर जाए लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, इसके बर्स्ट पे ही मुझे मारना पड़ेगा। Shadows of fate. Time to shine. The pinnacle of excellence. Written in the stars. Delved into depth. Fearless. Another star goes out. इस कर्क का ई होल्ड करके स्टार्ट कर। अच्छा चलो। Merciless. A dash of frost. Shadows of fate. Let the world collide. Goose on the loose. Merciless. Into the void. डैमेज नहीं है इस पे यार। Extinguish. मरने वाली है मेरी इस कर्क। एक मिनट रुको मेरे को। 2 मिनट 1 मिनट। 2 मिलियन मार फिर से। हाँ 2 मिलियन कब मैं मार दिया भाई। मैंने 2 मिलियन मारा। कब मारा। Strike a pose. Fearless. Let me scry. Surge. Mine to wield. The pinnacle of excellence. A little emotion. मेरे को लग रहा है इसका सेल तोड़ने के लिए। You overestimate yourself. Let my name echo in song. Decided by destiny. Extinguished. Mine to wield. मोना मारना भूल गया। रॉन्ग रूट। बताओ रोटेशन क्या करना है। बताओ मैं कर दे रहा हूँ। बताओ किस रोटेशन पे मारना है। हाँ इस कर्क का ई फिर फुरीना का ई। असल में फुरीना का बर्स्ट मेरा चार्ज नहीं है तो उसको चार्ज करने में टाइम लगेगा। बताओ मेरे को बताओ क्या करना है। मैं भी कर देता हूँ। इसको रोक दिया मैं। बताओ उसी रोटेशन पे किया जाए। तुम्हारी सलाह तो बहुत ज़्यादा काम की है मेरे लिए। बताओ भाई फटाक से। बहुत आसानी से फर्स्ट सेकंड फ्लोर कंप्लीट हो गया मेरा इसकी वजह से। टाइम लेके कोई ना। दो बार इस कर्क का बर्स्ट मारना पड़ेगा क्या। पुरीना एको मोना देन इस कर्क अल्टीमेट। ओके तो सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं इससे चालू करेंगे फिर उसके बाद
एक मिनट यार, क्या है? बिना बफ के नहीं तोड़ेगी। पुरीना एको मोना एंड स्कर्क अल्टीमेट ना। आई बर्स्ट इज इनफ, वन बर्स्ट इज इनफ। ओके ठीक है, मतलब कि बिना बर्स्ट के तोड़ेगी नहीं, तो इससे मेन बात क्या आती है कि पुरीना और इन सब का भी बर्स्ट तैयार होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले इसके लिए जाता हूँ, फिर उसके बाद इस पे जाता हूँ, फिर उसके बाद ऐसे, फिर उसके बाद इस पे। पुरीना का बर्स्ट रेडी, फिर इस कॉफियर का बर्स्ट, फिर मोना का बफ। Shadows of fate. Merciless. Another star goes out. ओ भाई हल्का सा रह गया। थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया। मेरे को लगता है कि मैं इसका 2 बार अगर ले लूँ शुरुआत में, तो लास्ट में मेरे को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं इसको ऐसे लेता हूँ, फिर उसके बाद Delve into destiny. Fearless. Time to shine. A burst of flavor. Decided by destiny. Let me scribe. Paradigm shift. Surge. हो गया भाई, हो गया। मैंने सेकेंड टाइम में मार दिया उसका तेल। Let my name echo in song. Fate is upon you. Extinguish. Power. Truth on the loose. Yoo-hoo! Shadows of fate. Mine to wield. Time to shine. भाई इसका वो ना रेडी हो जाए। Decided by destiny. बहुत एनर्जी इशू है। एनर्जी इशू है भाई। फवोनियस मनी ने रन कर रहा हूँ किसी पे, सब पे सिग्नेचर है। असल में क्या कर सकते हो, एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा मेरे को सबका। A proper send off. A new moon rises. Surge. Hear the echoes of the valley. Look, the rainbow. Coming at ya. This one's got your name on it. A proper send off. Three moons converge. Bring it. Letting brave names echo. Rash attack. Just one. Watch out. A proper send off. A new moon rises. Flame. Hear the echoes. कंप्लीट। थैंक यू सेम्पाई ब्लैंक ब्रदर, आपकी एडवाइस तो काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर गई यार। मैंने इस कर का यूज करने के बारे में सोचा ही नहीं था। नाविया 300 के नहीं मारा रहे। ओ नाविया का वो नहीं मारेगी ना। नाविया की तो प्रॉपर टीम है जो उसी से वो 300 के मारती है। अब तुम लूनर चार्ज के रिएक्शन में सोचोगे कि उससे तुम 300 के मारवाओ, तब तो बहुत इशू है। और ऊपर से जैसे ये जो लास्ट बॉस है, इस पर क्या कहते हैं, तुम्हारा जियो रेजिस्टेंस हाई रहता है। फुरीना पे 5 नहीं ब्रदर्स, वो है क्या कहते हैं, सिग्नेचर है। मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब मेरा करेक्टर्स इस करके देख सकते हो 1900 तक इसका ये है। इसका सिग्नेचर नहीं है मेरे पास, तो इसको मैं 5 स्टार की इस वेपन पे रन कर रहा हूँ। लाइट ऑफ रेनी सीजन नॉर्मल अटैक का डैमेज बढ़ा देता है। और रेशियो यही है 64 पे 269 का, 105 का वो है। फिर इस करके कहते हैं भाई अभी मतलब हाँ फुरीना है मेरी। फुरीना का 40 के HP है। फिर इस करके कहते हैं उस पर इसका सिग्नेचर वेपन है मोना पे टीडेरियस। यस मोना पे टीडेरियस है।
सिग्नेचर इज बैड ऑन फुरीना। निकल गया तो क्या करोगे? अभी मैं क्या कहते हैं इसका ये C2 पुल करने के चक्कर में हूँ। इसका जब आएगी फुरीना तो मैं इसका C2 जरूर निकालूंगा, जिसके बाद क्या कहते हैं ये सिग्नेचर भी अपने बहुत सही चलेगी। और एक तरीके से फुरीना क्वीन है यार। और स्कॉफियर पे भी क्या कहते हैं इसका खुद का वेपन मैंने दे रखा है। असल में मैं नाविया के वेपन के लिए पुल कर रहा था, इसके वेपन पे पिटी हार गया तो स्कॉर्पियर पे 10 का एक विश मारा तो स्कॉर्पियर भी गिर गई। तो मैं इसको सिग्नेचर पे ही बिल्ड कर दिया। इसका स्कॉर्पियर मैं निकाल नहीं रहा था असल में, वो बाद में निकल गई मेरी, क्योंकि मैं नाविया के सिग्नेचर पुल करने के लिए गया था और फिर उसके बाद क्या कहते हैं स्कॉर्पियर का सिग्नेचर गिर गया था और उसके चक्कर में मेरे को स्कॉर्पियर निकालनी क्या पड़ी थी, अर्ली गिर गई थी स्कॉर्पियर भी मेरी। हाँ फोनियस बेटर है मैं मानता हूँ, लेकिन क्या कहते हैं इस पैरालेविस कंटेंट के लिए फोनियस बहुत बेटर है। जैसे कि अब इसका है, इस पे मैं आराम से क्या कहते हैं फोनियस रन कर सकता हूँ, या स्काईवर्ड हाफ है मेरे पास, मैं वो भी स्काईवर्ड स्पाइन है ये भी मैं रन कर सकता हूँ इस पे। ER के लिए बहुत आराम, और क्रिट रेट का भी इशू नहीं देगा ये। जैसे कि 75 पे 214 का है इसका, क्रिट डैमेज कम हो जाएगा लेकिन बहुत अच्छा खासा रन करेगा। फिर उसके बाद क्या कहते हैं मैं रन कर रहा था जैसे नाविया तो मेरी ठीक है, नाविया का इशू नहीं है कुछ ज़्यादा, बहुत अच्छा रेशियो है। नाविया पे ये BP वाला वेपन है मेरा, और साथ में क्या कहते हैं 4 पीस ये बिल्ड है। जेलोलिन हुआ तो जेलोलिन का भी वेपन मेरा निकल गया था, तो इसलिए जेलोलिन पे भी उसका खुद का वेपन यूज करता हूँ मैं। इसको भी C2 में जल्दी करूँगा अगर बाद में आई तो। फुरीना का इतना डैमेज आता भी नहीं है या मैं मानता हूँ कि फुरीना पे इतना डैमेज नहीं आता है। मैं एक तरीके से कह सकते हो आई एम फुरीना सेम, और ना मैं फुरीना को बस सिंपिंग की वजह से बिल्ड किया हूँ इस तरीके से। और फुरीना के मैं कॉन्सिलेशन ज़्यादा से ज़्यादा पुल करने का ट्राई भी करूँगा, क्योंकि फुरीना एक तरीके से मेरी फेवरेट कैरेक्टर है और मैं उसको बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना चाहता हूँ। ये रेशियो देख रहे हो ना, अब इसको और मैं बेटर करने का हमेशा ट्राई करता रहता हूँ। ये 72 पे क्या कहते हैं 219 का रेशियो है, इसको मैं और बढ़िया करने की कोशिश करता रहता हूँ, क्योंकि फुरीना मेरी फेवरेट कैरेक्टर है भाई। None other than the Hydro Queen, Furina. और ये तो फालतू में निकल गई। दूसरा एक कैरेक्टर ये है जो मेरा फालतू में निकला। आज तक कभी ढंग से इसको बिल्ड नहीं किया, नॉर्मली छोटे मोटे बिल्ड दे के थमा रखा हूँ। जैसे कि ये 35 207 है, और प्लस क्या कहते हैं 4 पीस तो दिया है, ऐसा नहीं है कि 4 पीस नहीं दिया है। मैं इसके लिए सर्च कर रहा था क्या कहते हैं हमारा जैसे हंटर में क्रिट रेट का मेरे को आर्टिफैक्ट मिल जाए, लेकिन क्रिट रेट नहीं मिल रहा है मेरे को। मैं क्या करूँ उसके लिए? फुरीना पे 130 एनर्जी? हाँ, फुरीना पे 130 एनर्जी कैसे भाई? फुरीना का ना, फुरीना के कहते हैं एक मिनट, इसका कुछ आर्टिफैक्ट चेंज हुआ है। 150 एनर्जी नहीं था यार, इससे ज़्यादा था इस पे एनर्जी। तो हो सकता है मैंने चेंज किया हो किसी से। HP है, क्रिट रेट, क्रिट डैमेज। एक मिनट, इसको मैंने ये HP वाला दिया, ठीक है। हाँ ये वाला रहा। मैं भी कहूँ कि कहाँ मैंने स्विच कर दिया। मेरा 167 के आसपास मैंने इसकी एनर्जी रखी थी कि एनर्जी का इशू ना इसे, जैसे कि इसमें है तो मैं यही वाला रखना ज़्यादा पसंद करूँगा। नहीं, मैं 167 रखा था असल में, स्कॉर्पियर के साथ स्विच हो गया इसका आर्टिफैक्ट। 68 पे 212 पे क्या कहते हैं 168 या 170 के आसपास एनर्जी चाहिए होता है। मैं भी जानता हूँ इसको सोलो अगर रन करना चाहते हो तो मैक्सिमम अगर चाहते हो तो क्या कहते हैं इसको अच्छा खासा एनर्जी पे रन करना, तो इसका सबसे बेस्ट वेपन ही पाइप है। पाइप मैंने पुल किया था, पाइप मैंने निकाला, देखो पाइप मैंने निकाला था। इसका सिग्नेचर मेरे पास आ गया तो फिर मैंने इसको स्विच कर दिया, सिग्नेचर पे बिल्ड कर दिया इसको। और HP की भी लॉस नहीं होता है इसके पास, HP भी अच्छा खासा है, 40 के आसपास HP है इसकी।
स्टिल लो नहीं, 167 170 पे कोई इशू नहीं आता है। हाँ 5 बेस्ट है, मैं मानता हूँ 5 बेस्ट है, ये हमेशा मैं मानता हूँ, लेकिन 170 भी कोई इशू नहीं है, उतना इशू नहीं करती है मेरे को। क्योंकि अक्सर मैं इसको क्या कहते हैं रन करता हूँ, या तो फिर न्यू ब्लड के संग रन होगा, या तो फिर क्या कहते हैं पार्टी में एक और हाइड्रो कैरेक्टर अक्सर होता है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं फुरीना को एनर्जी इशू उतना ज़्यादा नहीं आता है। पाइप इज मेट। बंदा पूरा क्या कहते हैं वो मतलब एकदम क्या कहते हैं उसे, अरे इस पैरालेबिस क्लियर करने के मकसद से पूरा खेलते हो। हाँ डबल हाइड्रो के संग यूज करोगे तो वो तुम्हारा एनर्जी मैनेज कर जाता है। खासकर मैं इसको मेनली तो क्या कहते हैं, अब जैसे कि स्कर के संग यूज कर रहा हूँ, मेरी मोना रन कर रही है तो इस पर मैं TTDS यूज करता हूँ। अब TTDS के बजाय मैं इस पर क्या कहते हैं आराम से फेवोनियस का बुक यूज कर सकता था, लेकिन फेवोनियस का बुक मैं यूज करना नहीं पसंद करता हूँ, क्योंकि मोना अटैक बूस्ट देती है मेरी स्कर को। ब्रदर हमारे पास इतने स्किल्स नहीं है यार। मानता है कुछ स्किल इशू है, लेकिन फिर भी नॉर्मली कंप्लीट हो जाता है मेरा भी। अरे हाँ अरे हाँ इससे याद है, मेरे को इसका ये कंप्लीट करना है यार, ये मैं अक्सर बोल जा रहा हूँ, मेरे को ये कंप्लीट करना ज़रूरी है इस समय, इसका डेट जाने वाला। कहाँ गया ये रहा। मैं 10 मिनट में कर दिया भाई फ्लिंट और जी भाई का टीम साथ गया। अबे उसकी भाई उस बंदे के पास स्किल्स है अबे, तो आप पास पावर क्रिप्ट कैरेक्टर है तो क्या मतलब, कोई ऐसा गेम आ जाएगा जिसमें तुम पावर क्रिप्ट नहीं कर पाओगे तो फिर हो गया तुम्हारा कांड। मेरे ख्याल से इलेक्ट्रो स्लाइम अच्छा रहेगा कि, चलो इसको रखते हैं। इलेक्ट्रो स्लाइम पावर 2। भाई लोग अब झगड़ा मत करो यार, माना दोनों लोग प्रो हो। चलो ए मेरे कुत्ता मत मार देना, वही तो एक उम्मीद है मेरा। ए यार ये ढोकेश भाई निंजा। ये हाथ ये या हो। नहीं नहीं इवेंट कंप्लीट करने पड़ते हैं यार, क्या करोगे, खेलना मेरे को भी पसंद नहीं है लेकिन कंप्लीट करना पड़ता है। इसमें मैं लॉन्ग रेंज की चीज़ें ज़्यादा रखना पसंद करता हूँ, और इसमें मेरे को रखना रहेगा तो लूनर चार्ज का रिएक्शन होगा इसमें, रिफ्रेश करोगे। ओ ये चाहिए मेरे को, और दूर रेंज से नहीं, मेरे को शॉर्ट रेंज के कैरेक्टर्स चाहिए। ये पीछे से ये हमला करेगा, तीसरे वाले में नहीं नहीं ये ऊपर ही रहने दो इसको,
तीसरे वाले में इसको डालो, इसको डाल लो, बिगिन। ये नहीं 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 नहीं, इसको भी डालो यार, लॉन्ग रेंज का मिल रहा है ना। हाँ इसको डालो इसमें। मालूम है मुझे कि रिफ्रेश कर सकते हैं। अबे वो पीछे वाला बॉस नहीं मरा, दिक्कत करेगा। मर गया। खत्म खत्म खत्म, जीत जाऊंगा, आराम से जीत जाऊंगा। वो जो हरा हरा वाला बॉम्ब गिराता है ना, सही में बहुत बेकार है। मेले वेपन यूजर चाहिए, रिफ्रेश करो इसको। रूइन ग्रेडर होना चाहिए, चलो इसी को लेते हैं मेनली। तो मेरे ख्याल से इसको डालो यहाँ, और रूइन गार्ड यहाँ आएगा। इसके साथ अब मैं डालता हूँ, मैं तुम्हें चुनता हूँ पिकाचू। क्या कर रहे हो? नहीं जरूरत है, मैं कर लूंगा इसको, आसानी से हो जाएगा। मर गए सब, देख नहीं रहे हो? आराम से जीत यार। चलो इसको अपग्रेड कर ही लेते हैं। ओ इसको भी अपग्रेड कर लिया, बहुत सी। उससे होता क्या है मेरे को आइडिया नहीं है, पहली बार देखा मैं वो। निंजा डोकेस ऑन टॉप, वो देखो अभी अभी मारेगा। ए मार दिया, खत्म हो जाएंगे सब, खत्म। एक ही झटके में खत्म भाई, बहुत तगड़ा फायर करता है। सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है ये जो आए हैं सब कीपर, ये सील्ड वाले, उनको मारना। डोगेस भाई को थोड़ा दिक्कत होता है उसको मारना, फिर भी वो मार लेगा। पायरो स्लाइम रखा है भाई, डोगेस भाई मर गया मेरा। ओ नो, ये हिलिचरल से ज़्यादा पावरफुल। ओ हो, मैं हारने वाला हूँ।
ये कैसे हो सकता है? इसके लेवल्स काफी ज्यादा हाई हैं। ओ गलत सीन हो गया। डोगेस भाई का लेवल अपग्रेड हो गया। ओ सामने भी डोगेस भाई आ गया, लेकिन इलेक्ट्रो डैमेज से तो मेरे बंदे इम्यून है। डोगेस मर गया सामने वाला। सबसे ज़्यादा दिमाग खराब किया है मेरा ये पीछे वाला कैरेक्टर, ये वाला है। ये वाला सबको परेशान कर रखा है, मर ही नहीं रहा। उसको मैं लेवल अप करूंगा, पक्का लेवल अप करूंगा। हाँ रेंज 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 वाला नहीं है क्या कोई? रिफ्रेश करो। रिफ्रेश ये रखो यार, ये काम का है। यहाँ रिफ्रेश ऑप्शन खत्म हो गया मेरे ख्याल से। चलो इसको रखते हैं और हाइड्रो इसको और ओ भाई साहब देखते हैं कुछ काम करता है। मेरे ख्याल से मैं ये हारने वाला हूँ। हाइड्रो में इसलिए यूज़ किया हूँ कि कुछ है गया गया डोगेस गया। मैं वैसे ही हार जाऊंगा। सबसे मेन दिक्कत इसका ये चील है। गया मेरा पूरा ये हो गया। आधा डैमेज टेकिंग उड़ा पे उसका मेरा।
इसको रखूँ क्या? साथ में एलिमेंटल रिएक्स तो ये तो एनर्जी सेट का नाम भूल गया था पिछली बार. Who's that? Use the force authorized. इसके कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा हाईलाइट है. क्योंकि ये जो अभी आया है ये खत्म कर सकता है लेकिन मार नहीं पाएगा क्योंकि मेरे पास प्लेयर एडवांटेज है थोड़ा ज़्यादा. ओके अब यहाँ से थोड़ा दिक्कत हो सकता है. नहीं कोई दिक्कत नहीं हो आराम से मर जाओ. जीत गया. इसको अपग्रेड करूँगा. ओह अरे यार 5 स्टार. ये कौन सा है? मेलोस है क्या? पीछे ढकेल ली सब. कहीं कोई चांस नहीं. Use the force authorized. Let's move. Have a load of this. This one's well done. Let's move. Have a load of this. तो elite एज में रखा हुआ है. ये होना चाहिए मेरा राउंड. ये दो ठो elite जो है ये खराब हो गया. अब तो ये भी है. गया. एक ही हेल्थ पार बचा हुआ है मेरे पास. चलो कोई तो ढंग का आया. सबसे पहले इसको यहाँ से नीचे लाते हैं इसमें और फिर जो मेरी ये एलीट यूनिट की टीम है उसको डालो ऊपर. इसे ये
ये सामने जो ये बर्ड आ जा रहा है वो सबसे बड़ा दिक्कत कर रहा है मेरे लिए। Use of force authorized. Who's that? गया बर्ड। चलो इसके जीतने के चांसेस। Fall before me. ये अचानक से ही कैसे पलट गया? Cut down. You win. Cut down. समझ हो रही है वो कैसे जीता, बस जीत गया लास्ट में। ओ मकड़ा मिल गया। अब हारो या जीतो मेरे को नहीं मतलब उससे। Use of force authorized. वो यूनिट चाहिए हवा में मारने के लिए, अभी आएगी। सबसे पहले उसी को मारा जाएगा। Going somewhere? Let's move. ओके, कंटिन्यू किया जाए, चलो कंटिन्यू करते हैं। कुछ मिलेगा नहीं। Use of force अरे authorized. इसका 81 लेवल का ये कुत्ता एक डैमेज में बहुत ज़्यादा एचपी खाता है। Going somewhere? Who's that? Let's move. To the ferry. Let's move. Have a look at this. Pretty sharp. Roasted fry. लेट्स गो, देखते हैं कब तक हम लोग नहीं हारेंगे। कोई ना कोई तो आएगा ही हराने वाला मुझे। जैसे कि ये मेलूस आ गया, डैमेज ही नहीं पड़ रहा है मेरे बैल का इसके ऊपर।
मर गया। Use of force authorized. Who's that? Intel. This going somewhere? Fall before me. Intel. Have a load of this. You win. Fall before me. लेके जाएगा, ले गया। लेट्स गो कंटिन्यू। इसके बाद मैं बंद करूंगा 3 राउंड कंप्लीट करने के बाद। What a waste of time! Run while you still can! There's nowhere to hide! 61 लेवल का इसका कैसे है ये? ले जाएंगे सब, Run while you still can! ये हरा ले जाएंगे सब। Intel. Pretty sure. Run while you still can! There's nowhere to hide! एग्जिट कंप्लीट हुआ वो। तुझको बना करके, तुझको बना करके, तुझको बना करके ले जाएंगी ये दुल्हनी। क्लेम ऑल का ऑप्शन क्यों नहीं देते हैं सब यार? अरे गेम में इसी जीटी गेम में नहीं है। इन किताबों की जरूरत थी मुझे। चलो कितना हुआ? 600 है ना, चलो ट्राई करते हैं। आई नो निकल गई, बहुत सही। एक लुआ नहीं निकल रहा है मेरा। चलो आइनो को C4 करते हैं। मेरी C2 होगी कि C4 होगी मेरे को आइडिया नहीं है। C3 होगी। गाइज यही था वीडियो। अच्छी हाँ मैंने डिस्ट्रॉय किया पैरल एबिस को मेरे एक व्यूअर की मदद से। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में या अगले एक और लाइव स्ट्रीम के साथ। तब तक के लिए टिल एंड टाटा गुड बाय गाइज। मिलते हैं अगले एक नए लाइव स्ट्रीम में। फिर चलते हैं हम लोग 1 मिनट, फिर चलते हैं हम लोग, आते हैं, मिलते हैं आप लोग से, मिलता हूँ। टाटा बाय।